Assalamu alaikum, dear students. Today we will start lesson number 5 of new syllabus mathematics D2, which is quadratic equations and their graphs. The reference of this topic in your CIE syllabus is at 20. Today is our lesson number 26, but online lesson number 2. In this lesson we will study quadratic equation, and we will solve some questions of exercise 5a. The topic in this lesson is solving quadratic equations by factorization. We know factorization. Today we will study equation, quadratic equation, and then how to solve that quadratic equation using factorization. Now, equation. What is an equation? Any statement containing a sign of equality is called an equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपने पीछे पढ़ा था कि कोई भी एक्सप्रेशन, any equation containing one term in which the unknown is squared and no term in which it is raised to a high power. यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी होगा तो वो इक्वेशन बन जाएगी, और ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन की एक टर्म में स्क्वायर होगा और बाकी किसी भी टर्म में वेरिएबल की पावर 2 से ज़्यादा नहीं होगी, ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस. देखिए, इस तरह का एक्सप्रेशन जो है वो हमने पढ़ा हुआ है. ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें x की वेरिएबल x है और x की मैक्सिमम पावर 2 है. जब इस एक्सप्रेशन में साइन ऑफ इक्वलिटी लग गया और राइट साइड पे भी एक एक्सप्रेशन आ गया जो कि जीरो है, तो इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड एन इक्वेशन. तो ये इक्वेशन है. इसको क्वाड्रेटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ये जो पावर है, दिस पावर 2 मेक्स दिस इक्वेशन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किन किन तरीकों से लिखा जा सकता है? इन विच फॉर्म्स वी कैन राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. This is the standard form ax square plus bx plus 3, an equation in which there are three terms. All are written on the left hand side. One term with the power 2 of the variable and no other term with power higher than 2. So this is quadratic equation, and this equation is called standard form of quadratic equation. This equation is quadratic क्योंकि x को जब x से multiply करेंगे तो we will get x square. So these are two factors. So this form of quadratic equation is called factor form because this is written in the form of factors. So किसी भी quadratic equation को किसी भी form में लिखी हुई है, उसको factorization से solve करने के लिए we will write that equation in factor form first, and then we will further solve. How we will study in the next slides. This one is called vertex form or completing square form. Ax plus b whole square plus c equal to 0. This is ax square plus c. इसमें यही वाली टर्म है, यही इसी टाइप की इक्वेशन है जिसमें b जो है वो 0 है और x का स्क्वायर ax square plus c equal to 0. This form of equation is called pure quadratic. Solution of quadratic equation. किसी भी quadratic equation के solution को कहते हैं और roots of the equation. The roots are where the value of the variable in that equation is 0, equal to 0, where it is equal to 0. यानी ग्राफ अगर हम उसका प्लॉट करते हैं, वो अब अभी यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे. जब उसका ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ उस में एक्स एक्सिस को उन पॉइंट जहाँ पे जिस पॉइंट पे कट करेगा वहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी, फंक्शन की वैल्यू 0 होगी. दे आर आल्सो कॉल्ड रूट. तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं उनको रूट्स भी कहते हैं और उनको उसके जीरोस भी कहते हैं. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूजुअली टू सॉल्यूशंस होते हैं. Methods of solving quadratic equation. In your syllabus there are different methods of solving a quadratic equation. Number one is by factorization. Number two is by completing the square. Number three is by quadratic formula. Number four is by graphing. Number five is by using the square root.
So all these methods we will study in your CIE syllabus, but today in this chapter we will study solution of quadratic equation or solving quadratic equation by factorization. इससे पहले चैप्टर 3 और 4 में आप डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन के लिए एक्सप्रेशंस पढ़ चुके हैं कि अगर एक्सप्रेशन इस फॉर्म का हो, दिस इज एन एक्सप्रेशन इन विच देयर इज समथिंग कॉमन इन ऑल दी टर्म्स, तो उसको हम कैसे फैक्टराइज करते हैं? उस राइट साइड पे जो इक्वेशन का एक्सप्रेशन है उसको हम फैक्टराइज कर लेंगे और उसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। सेकंड, ये फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करना भी हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास इस तरह के दो फैक्टर्स आ जाएंगे। हर फैक्टर को फिर हम सॉल्व कर लेंगे जीरो के बराबर पुट करके। थर्ड टाइप इज दिस ए एक्स ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर, इसको भी हमने फैक्टराइज करना सीखा हुआ है। Fifth type is when there are two terms, both can be written as a square and there is a negative sign between those two terms. तो इसके factors जो है वो इस तरह है. How we factorize this type of expression, we know the method. And sixth type of factorization is by grouping. So if an expression of this type, an equation in which the expression on the left hand side is of this type, we will factorize this one and then we will further solve that equation. Solving quadratic equation by factorization. What is the method? To solve a quadratic equation by factorization, we will apply zero product property. This property is if two factors p and q are such that p multiplied by q, यानी उन दो factors का product zero के equal हो, then either p is equal to 0 or q is equal to 0 or both p and q are equal to 0. You know that any number or expression multiplied by 0 will give you 0 answer. अगर ये 0 होगा तो भी इन दोनों का product 0 होगा, अगर q 0 होगा तो भी इन दोनों का product 0 होगा. So we will use this property in solving a quadratic equation by factorization. जब हम उसके factors बना लेंगे तो हमारे पास दो factors आएंगे, उन दो factors में हर factor को 0 के equal put करके हम वहां से उस equation में जो variable है उसकी value find करेंगे. That values will be called solutions, roots or zeros of that equation. So this is an example of quadratic equation. 5x square plus 2x minus 3 equal to 0. इसको solve करना है by factorization. So first we will factorize the expression on the left hand side. This one, 5x square plus 2x minus 3. How we will factorize this? We know that we will multiply 5 with minus 3. We will get minus 15, and we will find two factors of minus 15 so that when they are added we get plus 2 and when they are multiplied we get minus 15. So those two factors are plus 3 and minus 3. Sorry, plus 5 and minus 3. Now we will break this middle term and we will write plus 5x minus 3x. Now we will make groups of first two and last two terms and we will factor out the common factor. 5x is common, x plus 1 is left, minus 3 is common, x plus 1 is left within the bracket. Now within the bracket these two are common, we will write this x plus 1 and then we will write 5x minus 3 in the second bracket. Now x plus 1 and 5x minus 3 are two factors of this equation. So here we will apply zero product property, that is p multiplied by q equal to 0. If we take p as x plus 1 and q as 5x minus 3, then the product of p multiplied by q equal to 0. So it means either p will be equal to 0 or q will be equal to 0. That is either x plus 1 will be equal to 0 or 5x minus 3 will be equal to 0. सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन, दीज आर लीनियर इक्वेशन. लीनियर वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो. अब इसमें x की पावर 1 है और इसमें x की पावर 0 है, कोई x नहीं है. तो इसे सॉल्व करेंगे, वी विल ब्रिंग दिस प्लस 1 टू द राइट हैंड साइड एंड वी विल गेट x इज इक्वल टू माइनस 1 और 5x इज इक्वल टू 3 and x is equal to minus 1 and x is equal to 3 by 5. So these are the solutions of this quadratic equation. To solve any quadratic equation, we will factorize the expression written on the left hand side by using
any method which we have studied. We will first identify the type of the expression and then we will factorize that expression accordingly. So let's solve some questions from exercise 5a. Question number 1, you are asked to solve each of the following equations. Its a part is a into a minus 9 equal to 0. So ये एक equation है. This equation is written in factor form. A एक factor, a minus 9 is another factor. So there was an equation which after factorization takes the form this. So there are two factors. This is p and this is q. So we will apply zero product property. That is, if p equal to p multiplied by q equal to 0, then property is either p will be equal to 0 or q will be equal to 0. So here p is a. So a will be equal to 0 or a minus 9 will be equal to 0. Solving these two equations, we will get the value of a. A is equal to 0 or a is equal to 9. तो ये इक्वेशन पहले से ही फैक्टर फॉर्म में लिखी हुई है, तो हमें फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है. वी विल नॉट एक्सपैंड दिस. इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने फैक्टराइज करना है. अगर आप एक्सपैंड कर दोगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. C part is 5c into c plus 1 equal to 0. अब देखिए 5 एक फैक्टर है, c एक फैक्टर है और c plus 1 एक फैक्टर है. या तो हम ये कर सकते हैं कि दोनों तरफ 5 पे डिवाइड कर दें. दोनों तरफ 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा और 0/5 जो है वो आपके पास 0 के इक्वली आ जाएगा. तो फिर दो फैक्टर c और c plus 1 आ जाएंगे. या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 5c को एक फैक्टर ले लो, put it equal to 0, and c plus 1 is another factor, and put it equal to 0 by applying the zero product property. अब यहाँ से c की वैल्यू आएगी 0/5, दोनों तरफ 5 पे डिवाइड कर दिया और c is equal to -1. 0 divided by anything is 0 always. So c equal to 0 and c is equal to -1 are the factors of values or solutions or रूट्स और जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन. तो नॉर्मली हम इसको सॉल्यूशंस ही कहते हैं या रूट्स कहते हैं. f part of this equation is -1/2h 2h plus 3 equal to 0. Now again we can bring this -1/2 this side to this side. इधर आके 0 से -1/2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही हो जाएगा आपके पास. फिर आ जाएगा h इंटू 2h plus 3 इक्वल टू 0. या फिर आप इसको एक फैक्टर ले लें -1/2h and put it equal to 0 and 2h plus 3 equal to 0 by applying the zero product property. -1/2h is equal to 0 or 2h plus 3 equal to 0. So solving this we will get h is equal to 0. 0 multiplied by -1/2 और 0 ये -1/2 जब इधर आएगा तो 2 इधर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 डिवाइड हो जाएगा तो आंसर 0 ही आना है. 2h plus 3 equal to 0. First we will take this plus 3 to right hand side which will give us 2h minus 3. So next step में हम h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. We will get h is equal to 0 or h is equal to -3/2. So whenever the fraction is improper fraction, so write answer in mixed fraction. So -3/2 will be equal to -1 and 1/2. So this is question number 1 in which equation is already written in factor form. So we just have to apply the zero product property and we will find the value of the variable used in that equation. Question number 2 is solve each of the following equations. Again in question number 2 you will be given an equation. This is the equation. And this equation is also written in factor form. K minus 4 is one factor, k minus 9 is another factor. There was an equation, इससे पहले कोई equation थी जिसको solve किया हमने, जिसको factorize किया तो आपके पास उसके ये दो factors आ गए. अब चूंकि उसी नहीं कोई अच्छा factors form में right hand side को 0 होना चाहिए हमेशा. लेफ्ट साइड पे अगर फैक्टर्स हैं तो राइट साइड 0 होगी तो ये फैक्टर फॉर्म बनेगी. अगर राइट साइड पे कोई नंबर है तो देन दैट इज नॉट
a factor form of the equation, that is an hidden quadratic equation, which we will study in the coming lessons. Now again here we will apply zero product property, k minus 4 into k minus 9. जब आपको पता है when there is no sign within the bracket, so it means there is multiplication sign. So applying this property, zero product property, this factor k minus 4 will be equal to 0, or k minus 9 will be equal to 0. Solving these two equations, we can find the values of k by transferring minus 4 to the right hand side, and we will get k is equal to 4 or k is equal to 9. So these are the two solutions, roots or zeros of this equation. लेकिन बाद आगे चल के जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें एक ऐसी इक्वेशन दी हुई होगी जिसको फैक्टराइज करना पड़ेगा. हम फैक्टराइज करेंगे तो इस तरह की एक इक्वेशन हमारे पास आएगी 2-3 स्टेप्स करने के बाद. जैसे अभी पीछे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, 2-3 स्टेप्स करने के बाद इस तरह की एक इक्वेशन आएगी जो फैक्टर फॉर्म होती है. हर फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे बाय यूजिंग जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, और फिर उसमें जो लेटर है, जो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. Okay, now it's E part I'm going to solve. This part is 7q minus 6, 4q minus 5 equal to 0. Again this equation is written in factor form. There are two factors, 7q minus 6 and 4q minus 5. So we will apply this zero product property, and we will put each factor equal to 0. This is 7q minus 6 equal to 0, or 4q minus 5 equal to 0. Solving these two, we will get 7q is equal to 6 और 4q is equal to 5. So q की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 over 7, और q की दूसरी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 over 4, which is again an improper fraction. So we will write the answer in mixed number, which is 1 and 1 over 4. Each part of this question is minus 2t minus 5 into 8t minus 5. Again the equation is written in factor form. There are two factors, so we will use zero product property by, and we will put each factor equal to 0. Minus 2t minus 5 equal to 0, or 8t minus 5 equal to 0. So solving these two equations, we will get the value of t. Minus 2t is equal to 5, or 8t is equal to 5. So t is equal to minus 5 by 2. Writing this in mixed number, we will get minus 2 and 1 by 2, or t is equal to 5 by 8. So this is what the solution of quadratic equation is. Because these equations are already written in quadratic form, so we have directly applied the zero product property. But in the next questions, the equation will not be written in factor form. You will be given an expression of the type which we have studied, ax square plus bx plus c. We will factorize that expression, on the left hand side of the equation, and then after 2-3 steps we will get an equation of this form, this form, this form, or this form, or this form. So then we will apply the zero product property to find the values of the unknown in the equation. So whenever equation is written in factor form and its right hand side is 0, right hand side must be 0, then we will apply zero product property. If its right hand side is not 0, then we will use another method. We will first write the equation in standard form. This we will study in the coming lessons, inshallah. So this is today's lesson. Your homework is, you will solve part B, D, E of question number 1, and you will solve part D, B, G of question number 2. Okay, this is my profile. If you have any difficulty, you can watch the recording of this lesson on this YouTube channel, the mathematics teacher Zahid Hussain, or your college website, which is College Management System. This is my
WhatsApp. You can send me your problems at this number. Practice makes knowledge perfect. So keep doing practice. Thank you for watching and Allah Hafiz.